Hey girls, you know what? Today I'm going on a beach party and I'm so excited. And अब आपने गेस भी कर लिया होगा कि आज के हमारी मेकअप थीम है सॉफ्ट बीची लुक. So without wasting any minute, let's get started with Inside Cosmetics. Okay, so I'm starting with the eyebrows. As you can see how thick and pretty sculpted my eyebrows are, but the only drawback is इसके बीच में gap है. सो आई यूज इस ब्राउ टैटू. ये क्या करता है, मेरी आईब्रोज के बीच में जितना भी गैप है ये उसको बहुत नेचुरली फिल कर देता है. ओके, सो लेट्स अप्लाई इट टुगेदर एंड इट्स डन. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स स्मच प्रूफ एंड वाटर प्रूफ. एंड एज यू ऑल नो, आई एम गोइंग ऑन अ बीच, सो ऑल द प्रोडक्ट्स व्हिच आई एम यूजिंग इन दिस वीडियो एंड इन दिस लुक मस्ट बी वाटर प्रूफ. ओके, सो समर से मेरा स्किन टाइप कॉम्बिनेशन रहता है. माई टी जोन बिकम्स वेरी ऑयली एंड स्वेटी एंड रेस्ट ऑफ द फेस बहुत ड्राई रहता है. सो मैं इस टाइम पे दो प्रोडक्ट्स एक साथ यूज करती हूँ. फर्स्ट आई यूज दिस प्राइमर ऑन माई टी जोन to control my sweat and oil, and rest of the face में I'll use this glowy tint. and इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने यहाँ पे ओपन पोर्स पे. oh my god, it's giving so blurry effect. मेरे ओपन पोर्स यहाँ पे मुझे विजिबल नहीं हो रहे. अब ऑयली स्किन तो थोड़ी देर बाद नेचुरली ग्लो करेगी, बट व्हाट अबाउट ड्राई स्किन, वो कैसे ग्लो करेगी इस रेडियंस फिल्टर ग्लोई टिंट से. ओके, सो लेट्स अप्लाई इट ऑन माय चीक्स. आई लाइक टू अप्लाई टेंट, सो मैं इसको बहुत अच्छी क्वांटिटी में लगाने वाली हूँ. सिर्फ वहीं लगाना है जहाँ प्राइमर नहीं लगाया. प्राइमर के ऊपर टेंट नहीं लगाना है. नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट इन माई स्किन प्रॉपरली सो दैट स्प्रेड होके इसका ग्लो बहुत अच्छे से निकल के आए. Okay, so the next step is concealing. As you can see, there is some darkness under my eyes and around my mouth. So उसको मैं cover up करूँगी and highlight at the same time by mixing these two concealers. I'm using these two shades, LN13 and LP05. Now I'll take it in a brush. And it's a perfect shade match. I didn't expect this, literally. Wow. I mean, wow. Okay, so the best part about these concealers are they are self-setting concealers. They don't need any kind of baking. Loose powder लगा के इनको set करने की कोई need नहीं है, अपने आप ही set हो जाते हैं. Okay, so the concealing is done and you can see how natural my face is looking, and we are not going to use any kind of foundation in this look. Okay, so now this is my favorite step in makeup. I love applying blushers, and for that I am using a stick blusher in the shade 05 Peachy Punch. I'm a huge fan of coral blushers. I don't know why. I just don't like pink blushers at all. Wow. कितना प्यारा शेड है ये. Little bit here also. Blend it out. It's so creamy and so light in weight. Oh my god. And it's so pigmented also. Now I'll lock this whole base with this Compact Plus foundation. This is Compact Plus foundation, and here we have a cute applicator also. It's very soft. ये सिर्फ मेरे बेस को लॉक नहीं करेगा, but it will provide coverage also, as you can see, and it will also help into control my sweat. To add some shine in my eyes, I'm using this Brick blusher. It's looking so pretty. Wow. I don't know it's visible or not, but मेरी eyes में थोड़ा सा pink tint दिख रहा है, जो कि बहुत natural से effect दे रहा है. Let's apply some mascara. Can you all see कि single coat में कितनी ज़्यादा volume दे दी इस mascara ने? Wow. Oh my god, such a unique wand. One side is for upper lash and the other side is for lower lash. Very unique. Now let's lock this cream blusher with this powder blusher for a longer time. It's very pigmented, so be careful while applying this. You can see I have already applied a coral cream blusher, so to lock that I have to use again a coral powder blusher. Now I'm getting very red, so let's the lips. Okay, so to line my lips, I'm using this pretty nude pink shade lip liner in the shade 04 Unclad Nude. This is the prettiest nude lip liner I've ever seen in this budget. Such way. Now I'm using this pretty shade to fill my lips. Blend it all together. It's perfect, but I'll add some gloss also. Can you all see the difference between glossy lips and creamy lips? Wow. This lip gloss is giving me a perfect pouty effect. It's looking so plumpy. Let's apply this also. It's not that your regular chunky and powdery highlighter. It's a creamy highlighter which gives a very natural effect. Okay, so now I'll apply this highlighter on my high points to add some extra glow. A bit here on the nose and bridge of the nose.
The shade of the highlighter is 01 Mermaid Scale. It's a very pretty and natural highlighter. So here I'm ready and मैं तो जा रही हूँ party करने. Don't forget to comment how much did you like this mini tutorial and do you like this look or not. But I'm just loving this look. Wow. I'm so excited. Bye bye.